welcome to my channel. My name is Simran Devani and this is my new podcast channel, Saturdays with Simran, where you will get every Saturday a new podcast based on my life experiences. Like currently I am BTech first year student, so I would like to share my college experiences, the mistakes which I did and you shouldn't definitely when you join a new college or you are already in the college or maybe within the high school. So I hope you like the video and make sure to like, share and subscribe if you like it really. So first things first, I am from a National Institute of Technology सूरत SVNIT सूरत. तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के बहुत सारे लोग हैं और फर्स्ट थिंग्स कम्स इज़ लाइक फ्रेंड्स. जब भी हम कॉलेज जाते हैं डेफिनेटली the first thing is essential thing which everyone needs and search for is like a good friend, a good company. And it's true that your vibe attracts your tribe, but I would prefer कि सबको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए and then you should make friends because बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं. आप अपने टाइप के लोगों को ढूंढोगे, पहचानोगे तो उसमें टाइम लगेगा. इनिशियली आपको सबसे बात कर लेनी चाहिए बिकॉज कौन कहाँ कब कैसे काम आ जाए हमें कुछ नहीं पता होता. तो आई फील हाँ सबसे बात करनी चाहिए, बट चूज़ योर पीपल जिससे तुम शेयर कर पाओ सब कुछ. एंड यू नो द सर्टेन पीपल विच यू नो दैट दे अंडरस्टैंड यू एंड यू कैन शेयर एवरीथिंग विद देम. वैसे बहुत कम लोग होने चाहिए एंड ट्रस्टेबल लोग होने चाहिए एंड उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. यू माइट टेक 1 month, 1.5 month, इवन 2 months. एंड इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और एन एम्बीवर्ट तो शायद आपको कम टाइम लग जाए. बट आई पर्सनली एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन और एन एम्बीवर्ट पर्सन. आई वुड डेफिनेटली क्लासीफाई माई सेल्फ एज एन एम्बीवर्ट बिकॉज आई कैन बी अ वेरी गुड extrovert. Also depends on the person and the vibe. Like कभी कभी मेरा मूड अच्छा होता है तो काफ़ी सारे दोस्त बन जाते हैं. हॉस्टल में काफ़ी सारे दोस्त हैं बट अपार्टमेंट में वैसे किसी से इतनी वाइब मैच नहीं करी अब तक तो नहीं बने. तो इट डिपेंड्स हाईली ऑन योर नेचर टू एंड इट्स वेरी मच ओके टू टेक टाइम टू मेक फ्रेंड्स. लाइक बुरा कभी मत सोचना. लाइक मुझे इनिशियल डेज में बहुत होता था कि क्या मैं सफिशेंट नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, क्या मतलब यू नो यू जस्ट सेल्फ डाउट योर सेल्फ कि हमारे फ्रेंड्स क्यों नहीं है और बाकी लोगों के इतने सारे फ्रेंड्स क्यों है. बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम हॉस्टल फ्रेंड्स जो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कैंटीन पे चिल कर रहे हैं, खेल रहे हैं ग्राउंड्स पे. एंड देन you just start comparing yourself if you don't have that good friends like me. मेरा इनिशियल अभी ऑलमोस्ट 1.5 month हो गया है. I have made friends fortunately and they are very kind. मेरे डिपार्टमेंट से भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, बन रहे हैं. दे आर इन प्रोसेस एंड आई विल अपडेट अबाउट इट इन फ्यूचर डेफिनेटली. तो एपिसोड 1 है अभी. But still I miss those vibes of my old friends, old school friends जो कि of course 2 months में मैं expect नहीं कर सकती हूँ which is very wrong. अभी 4 साल मुझे ये कॉलेज में निकालना है तो देखते हैं 4 साल के बाद शायद अच्छे फ्रेंड्स इतने बन जाए. बट एट दी मोमेंट आई मेट सम वेरी स्वीट पीपल, वेरी काइंड पीपल एज वेल एज सम मीन पीपल. एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ दैट आपको बात तो सबसे ही करनी चाहिए. लाइक इवन इफ़ यू नो अ सर्टेन पीपल विच जस्ट यू नो डज बैक बिचिंग अबाउट यू या फिर यू नो द बैकग्राउंड कि वो नहीं है आपके दोस्त, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट उनसे कॉन्टैक्ट रखो. डोंट जस्ट एंड द कॉन्टैक्ट एवर इन योर कॉलेज अनलेस एंड अनटिल you are like very much done and the situation is very much awkward. But it doesn't occur like that ever in the college according to my point of view in the initial days. So I feel कि be a flexible person, don't be a rigid person कि मतलब मुझे तो इससे कभी बात ही नहीं करना है, इसने ऐसे कैसे कर दिया. No, just be cool, kind with everyone and don't lose your personality for anyone else in your life. That's basically my point. And last but not the least, just choose your friends very wisely, very wisely because it affects you somewhere. Like अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे तो तुम अच्छा करोगे, अगर तुम्हारे
अलग टाइप के दोस्त हैं जो कि कुछ अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, तो डेफिनेटली यू वुड गेट इन्वॉल्व टू नोइंगली अननोइंगली, बिकॉज वो दोस्त के साथ होता है कि यार चल चल चल, एंड इट्स कॉलेज, यू गेट न्यू फ्रीडम, सो यू जस्ट वॉन्ट योर फ्रीडम एंड यू जस्ट डू क्रेजी थिंग्स which you shouldn't sometimes. And so I would suggest, choose your friends very wisely, take your time, choose them, and just it would lead to a good future if you have very good friends जिनके कुछ लाइफ गोल्स हों. मतलब मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रही कि लाइफ गोल्स ही होने चाहिए, पूरा प्रोडक्टिव डे ही होना चाहिए उनका, एंड दे शुड बी स्टडिंग 24 hours or at least studying maximum hours, but you should do fun too, but it should not be just fun. You should have some aim in your college life, which is actually my second point, and I would come to that very soon. और पॉइंट जो मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट योर कॉलेज टू बी लाइक अ करण जौहर मूवी, जो कि आपने आज से पहले भी बहुत सारी जगह शायद सुन लिया होगा, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज मेरे इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थे. मैंने भी सुन लिया था, सबने सुन लिया है अब तक कि कॉलेज जाके हम बॉलीवुड मूवी नहीं करने वाला है, सबको पता है. बट थोड़े से एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जैसे कि हम घूमने जाएंगे, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा, क्लब्स होंगे, सोसाइटीज़ होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, विच इज़ देयर आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट इज़ नॉट देयर, बट स्टडी का प्रेशर भी रहता है. लाइक हमारे डे 1 से असाइनमेंट्स चल रहे हैं, टेस्ट भी आ चुके हैं, एक मंथ में मिड सेम है, एंड I don't know what am I doing in my life, because मेरे भी मिड सिम्स आने वाले हैं, but I also want to explore certain things in the college. So yeah, I'm doing my podcast too, which I don't know would be up or not, because this is my try to, which I would discuss later in the video. But yeah, you should try different things, and that is what we would talk about later in the video. But yeah, what I mean is, college is not what you see in Bollywood. You should have expectations, but ज़्यादा expectations मत रखना. कॉलेज जाके पढ़ना तो पड़ता ही है, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ. पढ़ना पड़ता है, फेस्टिवल्स भी एंजॉय होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं तो बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा. The thing which I discussed earlier was about have some life goals. Like आप कॉलेज में जा रहे हो तो सिर्फ फन फ्रेंड्स होने चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट वॉट आई मीन इज़ आपको क्या करना है, आप 4 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखोगे, वो भी आपकी लाइफ में अभी से क्लियर, आई वुड नॉट से 100% क्लियर होना चाहिए, बिकॉज लाइफ हैज़ इट्स ओन रूल. ऑफ कोर्स हम जो डिसाइड करते हैं वो एट द एंड नहीं ही होता है. लाइफ में अलग अलग चॉइसेस हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट व्हाट आई मीन इज़ एक आइडिया, एक रफ स्केच आपको होना चाहिए कि 4 साल के बाद आपको अपनी लाइफ में करना क्या है. इंजीनियर्स इसलिए ही हमारी कंट्री में अभी थोड़ी सी अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते, क्योंकि इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद एक इंजीनियर सोचता है कि अब मुझे कोर में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मैं ये करूँगा, मैं स्टार्टअप करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा. सो व्हाट आई सजेस्ट इज़, इट्स 21st century guys, we have much resources, so you should start researching about the things which you would like to do after 4 years. like इट्स ओके, मुझे पता है सबको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, जितने भी लोग इंजीनियरिंग में हैं, या फिर आप कोई भी फील्ड में हो, लाइक कोई बीएससी में, एमएससी में है, या फिर कोई बीई में है, कुछ भी कर रहे हो तुम लाइफ में, हो सकता है तुमको इंटरेस्ट ना हो, तो वो चीज़ हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही छोड़ दें, या फिर अगर तुमको छोड़नी भी है तो तुमको तुम्हारा प्लान बी क्या है पता होना चाहिए. एंड बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, एंड इफ़ यू आर नॉट, लाइक कॉलेज फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, क्लब्स ज्वाइन करो, मैनेजमेंट स्किल्स जो कि आप एज ए वॉल्टियर सीख सकते हो, या फिर जस्ट पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इवेंट्स, कुछ भी करो, बट अपना इंटरेस्ट एक एरिया में बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आई वुड सजेस्ट ढूंढ के रखो, एंड ट्राई टू डिसाइड वेयर यू वुड सी योर सेल्फ आफ्टर द 3 years, बिकॉज फ्रेंड्स, फन सब होता रहेगा, सब होना भी चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉलेज इज़ अबाउट. बट डोंट फॉरगेट द अल्टीमेट पर्पज ऑफ योर लाइफ for which you came into the college. Like, you should do fun. I'm not telling you should study 12 hours, right? But you should at least dedicate like 2 or 4 hours of your life towards a thing which you want to do after 4 years, because that's what life is about at the end. I might
sound very mature, but I am not too. Like right now I have my life choices. मुझे पता है मुझे 4 साल बाद क्या करना है. मुझे नहीं पता कि मैं उस पर सक्सेसफुल होंगी क्या नहीं होंगी या फिर क्या ही होगा, मुझे वो नहीं पता. बट मुझे एटलीस्ट इतना पता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है और वो कैसे करना है. लाइक आई लाइक कोडिंग डेफिनेटली, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग लिया था. बट मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला विच आई प्लान. So, yeah, life has its own rules, as I said, but I have not left my passion. I want to turn my passion into profession. इसलिए मैंने कॉलेज के साथ साथ अलग से कोर्स भी किया है. अब ऑफ कोर्स मैं इतनी कंसिस्टेंट इंसान हूँ नहीं. मैं शायद अच्छा साउंड कर रही थी, बट मैं भी इतनी अच्छी डिसिप्लिन्ड लड़की नहीं हूँ. बट आई ट्राई माई बेस्ट एवरी डे टू do my best into the field which I want to. Like I cannot definitely dedicate, of course, 4 to 5 or 6 or as a computer science student do in the programming. I have electrical engineering, of course, so I have to study my own subjects too. But what I mean is, like, I know I have to do this, so I take out at least 1 hour or 2 hour every day, and if not every day, at least 4 times or 5 times a week. बिकॉज हाँ, फेस्टिवल्स आते हैं, मैं भी एंजॉय करती हूँ, मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता. मैं भी आप लोगों की तरह इंसान ही हूँ. मैं कोई बहुत अच्छी, मतलब द वे आई साउंडेड बिफोर कि हाँ लाइफ गोल्स होने चाहिए. और उसको वॉट आई मीन इज़ ट्राई करो अचीव करने का. 100% कोई भी इंसान नहीं कर सकता है. मैं बोल रही हूँ, मैंने भी नहीं किया है, इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल भी दे रही हूँ. तो जस्ट ट्राई इट, बिकॉज 100% तो नहीं होगा, 60% होगा, 50% होगा, बट कुछ तो होगा. अगर पता ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. तो या आई वुड सजेस्ट हैव अ पैशन एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट इन योर प्रोफेशन फॉर अ गुड सक्सेसफुल लाइफ. एंड आई एम ट्राइंग टू. आई डोंट नो मैं सक्सीड करूँगी, आई डोंट नो मैं सक्सीड करूँगी कि नहीं करूँगी, बट आई एम ट्राइंग. आई एम एटलीस्ट trying, which is the basic need right now as a fresher. The important thing which I would like to involve is also कि मतलब यहाँ पे कोई अलग कॉन्टेक्ट समझ लेगा कि मतलब सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करो, प्रोफेशन को मत करो. बट या आई डोंट मीन दैट. डेफिनेटली जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल है, तो आई वुड नॉट लीव माई इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स एंड डू द कोडिंग एंड अदर एक्स्ट्रा एक्सेट्रा. So definitely I would not leave my electrical and study my coding. या फिर जैसे कि पॉडकास्ट जिसमें मुझे इंटरेस्ट था और मैंने स्टार्ट किया. एंड आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स. लाइक इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग करने का स्टार्ट किया था, बट आई एडिटेड इट, बट आई डिडंट लाइक इट बिकॉज आई फील लाइक ना, it was not my vibe. And I am that kind of a person which feels very much insecure about imperfectionism, and that's not a great thing. Like imperfect things can be perfect too, and there's nothing called as perfect exactly. But what I mean is, just try to identify the areas of your life in which you are interested in and start building the skills. But at the end of the day, it should not affect your GPA, because एक प्रोफेशन तो सिक्योर होना ही चाहिए. जब तुम्हारे पैशन में तुम श्योर हो जाओ एंड यू आर रेडी फॉर इट एंड यू हैव समथिंग बिग इन योर हैंड्स, देन यू कैन लीव योर करंट जॉब या फिर कोर्स या फिर कुछ भी कर रहे हो तुम. बट ऐसा नहीं करना कि जो अभी कर रहे हो वो छोड़ के तुम किसी और चीज़ के पीछे जाओ, बिकॉज दैट्स एट दी एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीवन. So yeah, you should follow your passion and convert it into profession, but it should not affect your personal life या फिर your marks या फिर whatever. a big change नहीं होना चाहिए उसकी वजह से, जो आपकी लाइफ में शायद आपके लिए मुश्किलें ला दे. So yeah, make sure you follow your passion, but it should not affect your personal career or your mental health. Try your best to convert your passion into profession, but if it's not possible, you should give importance to your current profession या फिर course या whatever it is, and make sure you just continue your passion when you are best in your profession and courses currently. And you should just basically try out different and new things. You never know तुमको कब क्या कहाँ ले जाएगा. One more point which I would like to involve is about friends, that you should try to make different culture friends too. यहाँ पे it's like सबके अलग अलग opinions होंगे, but in my point of view, and if I would
consider my experience, you should make different culture friends because you learn a lot of things. Like मेरी हैदराबाद की फ्रेंड है, मेरी एक उत्तर प्रदेश से फ्रेंड है, मेरी एक बहुत सारी अलग अलग जगह से फ्रेंड्स होती है। और ये आई थिंक इज़ एडवांटेज ऑफ एन NIT और IIT बिकॉज यहाँ तुम इतने सारे कल्चर से मिलते हो, इतने सारे कल्चर से मिलते हो, तुम उनका कल्चर अडेप्ट करते हो, कभी कभी तुम उनका एक्सेंट देखते हो एंड यू लर्न अबाउट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, रिलीजन प्रैक्टिसेस विच दे फॉलो एंड यू जस्ट बेसिकली लर्न अ लॉट ऑफ Indian culture things which is also important, and I feel it's very good and interesting. Like you should know it's about our country and मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करके। एंड अपने कल्चर के फ्रेंड्स तो होने क्या चाहिए, बन ही जाएंगे। द फर्स्ट थिंग इन द कॉलेज विच आई हैव एक्सपीरियंस इज लाइक दैट इफ यू फाइंड योर रीजन पीपल यू वुड बी एट द हैप्पीएस्ट बिकॉज वो एक अपनी रीजनल, जैसे कि आई एम गुजराती, तो यहाँ पे गुजराती लोग मिल जाते हैं ना, तो वो गुजराती हिंदी से गुजराती का जो ट्रांजिशन होता है ना लैंग्वेज वगैरह से, एकदम बड़ा स्माइल आ जाता है लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ। तो दैट इज़ अ डिफरेंट वाइब। एंड अपने कल्चर के फ्रेंड्स तो तुम ढूंढ ही लोगे, बन ही जाएंगे, बट यू शुड ट्राई टू मेक डिफरेंट कल्चर फ्रेंड्स एंड अडेप्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देम टू। सीखो, उनसे भी सीखो, उनको सिखाओ, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। डू the most important thing which I would like to involve is also that don't lose your contact with your family and old friends. Like you should have a guidance in your college which is definitely the best choice is your parents। उनसे अच्छी choice ना ही कोई होगी, आगे होगी ना ही कॉलेज के, मतलब जब तुम किसी प्रोफेशन में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कहीं पे भी जाओ दुनिया में, उनसे अच्छी गाइडेंस तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन बी अ बेटर एडवाइज़र देन योर पेरेंट्स। एंड आई वुड सजेस्ट कुछ बातें पेरेंट्स से नहीं हो सकती, आई डेफिनेटली अग्री, जनरेशन गैप वाली चीज़ें हो गई, तो देन यू कैन जस्ट कॉल और टेक्स्ट एंड बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स। कोई भी स्कूल फ्रेंड्स हो, कोई बहुत क्लोज इंसान हो, इन कजन्स, या फिर just basically have a person with which you can discuss your current things because you are getting a freedom in your college and freedom would lead you to certain bad choices which you need to improve, definitely you need to improve। and वो तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी करंटली बने होंगे, ऑफ कोर्स यू हैव थिंक सेम थिंकिंग लेवल, इसलिए तुम लोग फ्रेंड्स हो, बट यू कैन नॉट जज तुम लोग सही कर रहे हो या तुम लोग गलत कर रहे हो। बट वेन यू वुड डिस्कस दैट पॉइंट विथ योर पेरेंट्स, या फिर अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको तुम बताना चाहते हो अबाउट द थिंग्स एंड यू वुड डिस्कस, तो अगर तुम कहीं गलत जा रहे होगे तो दे कैन गाइड यू एंड दे शुड गाइड यू एंड यू शुड अडेप्ट दैट गाइडेंस बिकॉज एट द मोमेंट हम नहीं समझ सकते हम कहाँ गलत जा रहे हैं बिकॉज इट्स जस्ट द मैंटालिटी एंड यू गेट अ न्यू फ्रीडम। तो हमें करना होता है हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, हम सही कर रहे हैं, एक वो सही होने का घमंड आ जाता है टू बी ऑनेस्ट, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड डिस्कस योर एवरी डे लाइफ विथ योर पेरेंट्स, बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर पेरेंट्स एवरी डे जस्ट हैव अ कॉल, कुछ भी रैंडम बातें कर लो, कुछ भी करो, बट हैव अ कॉन्टैक्ट, इट्स वेरी मच नेसेसरी। एंड मेक श्योर यू डिस्कस योर इम्पॉर्टेंट, वेरी नॉट all but of course important decisions with your close person which could be your best friend, cousin, कुछ भी, जिससे भी तुम सबसे ज़्यादा क्लोज हो उससे। now there could be some person जिनके पास कुछ भी नहीं हो, जिसके साथ वो डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू शुड जर्नल डाउन योर थॉट्स इन द कॉलेज वेन एवर यू फील लो या फिर you feel different because there would be definitely the times, I have been through times already where I didn't feel good in just 1.5 months। हो सकता है सबके साथ ये एक्सपीरियंसेस ना हो, बट हाँ आई एम दैट ओवर सेंसिटिव किड, मुझे बुरा लगता है, बहुत लगता है, तो या इट्स नॉर्मल फॉर मी टू गेट सैड एंड फील लो एंड कभी कभी घर की याद आ जाती है, तो इट्स वेरी नॉर्मल इन द इनिशियल डेज टू फील लो। सो जस्ट ट्राई टू जर्नल डाउन योर थाट्स इन अ डायरी या फिर इन योर फ़ोन, या फिर इतने सारे एडिटर्स है कहीं पे भी, कुछ भी, जस्ट I would suggest feel what you feel, like don't keep your emotions inside yourself because
एट द एंड ऑफ द डे वो कभी ना कभी तो बाहर आना ही है, तो why not on the spot? Because if you would keep it inside, it would harm you somewhere. And I feel emotions should be flown like a water, because there's no reason to hide your emotions. You are a human, you have emotions, and you should feel that. It's very normal. The one thing which I would like to involve in the video is like, you would definitely feel FOMO sometimes in your college. FOMO is basically fear of missing out, which I hope everyone knows over here. And I would suggest be away from those situations when you start to feel FOMO. Like मेरे साथ बहुत होता है जब मैं दूसरे कोई भी, मेरे इतने सारे ग्रुप्स नहीं बने अब तक, टू बी ऑनेस्ट आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सन. मेरे फ्रेंड्स हैं बट हम लोग कहीं बाहर घूमने इतना जाते नहीं हैं, इतने भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने आई वुड से. And I don't know why, but it's okay. I would try to make a good friend. I am on a journey too, guys. मैं भी आप लोगों जितनी छोटी हूँ, अगर मुझे कोई सुन भी रहा है तो. And yeah, I'm not a desperate friend person. Like हाँ, मेरे से कोई अच्छे से स्वीटली बात कर लेता है, हम भी कर लेते हैं, बट you should not be desperate friend person, because then you just lose your own self-respect. So that is also an advice. Don't do it. Have a friend, have a good classmates, have good contacts, but it's not necessary to have that FOMO वाले फ्रेंड्स जो हमेशा बाहर जाते हैं, घूमते हैं, खाना खाते हैं, कैंटीन में साथ में चिल करते हैं. हाँ, होने चाहिए ऐसे फ्रेंड्स. अगर बन गए बहुत अच्छी बात है, ठीक है यार, मज़े लो लाइफ के. बट वो टाइम मीन इज़ लाइक, अगर नहीं बन रहे हैं अब तक, मेरे भी नहीं बन रहा है, फोमो लगता है, तो इट्स नॉर्मल. फील इट, इट्स ओके. यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग. you would get it in future, and if I do, I'll definitely share in my upcoming podcast. But right now I am into the situation to where I just feel FOMO sometimes. And yeah, it's not a good phase, but what I would suggest is like, it's okay to feel a FOMO and jot down your thoughts, and just to get out of that FOMO. What I do is I just go out on self dates. Like yeah, I go to the shopping, random grocery shopping. जो आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो आप समझ सकते हो, या फिर आप कहीं पीजी में रहते हो, या फिर कहीं पे भी अकेले रहते हो, तो हमें कुछ चीज़ें लेनी होती है. लाइक it's like basically getting your own home, but you just have to organize everything yourself and get it done yourself, which is a difficult part in the college too. Like अभी अभी फ्रीडम भी मिला है, बट सब ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, खुद का ख्याल भी रखना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है. तो क्या, द सिचुएशंस गेट टफ समटाइम्स. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, जब भी फोमो लगे, just go out on self dates. Like I am currently in Surat. The Surat is famous for cafes, so I just go on just any random cafe around. And I'm fortunate to have very good cafes around my college area too. Like 5-6-10 मिनट मिल जाते हैं आराम से. Just go on random self dates. Self love is very important in today's era, and I am very excited to do a podcast on self love, because I am a very self love person. I am an introvert. मेरे friends नहीं है इतने सारे, मेरी बस एक बेस्ट फ्रेंड है, बट बहुत अच्छी है. शी इज़ मोर देन इनफ. शी इज़ मोर देन 1000 फ्रेंड्स फॉर मी, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दैट. बट हाँ, कभी कभी अकेलापन लगता है, तो आई एम अबाउट सेल्फ लव. आई लव सेल्फ लव, एंड इट्स अ जर्नी टू, एंड आई वुड लाइक टू शेयर ऑन पॉडकास्ट टू. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, make sure to comment down and we can discuss it. Anyways, coming back to the point that you would have different people in your college, so you will be get judged on many situations. Many situations come जहाँ पे लोग तुम्हें जज करेंगे, but just try to avoid it and do the things which you feel are perfect for you, and don't pay attention to the unnecessary comments. Like college life is all about judgments. Like हमने वो statement पहले से सुन रखा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना. You would just relate to this so much when you go to your college, because you would get so many opinions, thousands of opinions, which would be negative as well as positive, but majority of the time negative, which is a harsh reality. But हाँ, मिल जाते हैं negative comments, but you should not get affected. You should keep doing the things which you want to do if they are right. I would not say always,
reject your judgments of your people. Like, you should have your people. Your people includes the most important persons in your life, like your parents, your best friend, your cousin, or the person which you are closest to, and of course it includes yourself. So unless and until you feel you are doing good and great and it's perfect, you should keep doing the things no matter whatever the people would say. And I would like to repeat, if you are an oversensitive person like me, make sure to keep yourself flexible and don't let your mind and your mental peace कुछ भी get affected by people's comment. Like, मेरे साथ बहुत हुआ initial days में, like people, I would not blame people. So yeah, if you are an oversensitive person like me, शायद आप लोगों को ज़्यादा बुरा लग जाए, but make sure you keep yourself calm and don't let your peace get affected by other people's judgment, comments, behavior, or anything. Just be yourself. Don't lose yourself after the judgments of other, which may happen. I had been through that phase too. Like, I got some comments, I got some judgments, and then I was like, yeah, I should change myself. Maybe I am not perfect, and yeah, it's a different phase, but I would suggest never change yourself, because even if you try to do change yourself, you would change for a while and then you would be back to your normal nature, and then basically you are just faking yourself, and faking never lasts and leads to a good result. So I would suggest just be yourself. And if you are your and if you are searching for your people would love your and would love you the way you are. They would never ask or judge you for what you are. So make sure you don't change for anyone in your college, and just be yourself. Represent yourself at your best, and people would love you if they are actually your people. Again, an important point is that make sure you have a small conversation with your seniors, which are already in your college. Definitely you should ask second year, third year, and even fourth year students for the placements and etc advices which they would give you. If depends on your seniors too, like choose good seniors too, because in seniors also you have to make choices. I am repeating it, in college you have to make choices in everything, in friends, in departmental friends, in classmates, even in seniors, even in your subjects, even in your interest, in almost everything. And you should handle these choices with a maturity better. And I would like to add that organize your hostel room too. Like, I know it's difficult, I know, I have been through that phase जहाँ पे मेरा रूम भी क्लीन नहीं था एक हफ्ते तक. मैंने भी बेडशीट चेंज नहीं की थी 2 हफ्ते तक. बट बेसिक हाइजीन, थोड़ी सी अच्छी हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, थोड़ी सी क्लीनलीनेस, सब मेंटेन करना लाइफ में ज़रूरी होता है. एंड इट मेक्स यू फील गुड. आई डेफिनेटली फील यू विल फील योर सेल्फ जब तुम खुद भी करोगे. यू वुड लाइक योर एनवायरनमेंट, यू वुड लाइक टू लिव इन योर रूम. सो बेसिकली मुझे पता है इनिशियली मुश्किल होगा, इंजीनियर्स तो फेमस है मैसी होने के लिए, लेकिन just try to organize your room and your space accordingly and maintain hygiene definitely. And last but not the least, I would like to sum up the video with the fact that you should understand the fact that you cannot be friends with everyone in your college. Not everyone would like you, and there would be a difference of opinion with many other people too, and you would find beautiful angels, or I can say very pretty people, kind people, sweet people in your college too. It just matters how your perspective is towards life. Like, I have been a person जो कि इनिशियली बोलती थी कि ये लोग तो वैसे हैं, ये लोग तो वैसे हैं, ये लोग तो वैसे हैं, बट अगर हम यही करते रहेंगे then we are just stuck at a place. So try to have a broader perspective, try to identify your people, enjoy your life, and you have to do it, because 4 साल तुम एक ही चीज़ को गलत नहीं बोल सकते यार. You have to make friends and you have to adjust with the environment, you have to adjust with everything around, and जितना जल्दी हो सके तुम उसको अडेप्ट कर लो.
जितना हो जल्दी हो सके तुम उसको अडेप्ट कर लो. इट वुड बी better for you and you would just feel it's your place now. Once you start to feel that it's your place, there's just no going back. You would love the place as your home, and after 4 years you would love the place as your home. That was all about my current college experiences. Upcoming experiences would also be there, which I would like to share, and it's not always about my college. I have different journeys in my life too, which I would like to share on my channel. You would get a new episode on every Saturday on YouTube, and I would try to upload it on Spotify too. Let's see if it's possible. I would definitely do. And that was all about it. This is me, Simran Devani, signing off. Bye bye.